So I guess I am audible, I am visible perfectly, right? ठीक है मुस्कान? यस भैया। चलो, so आज हम अपने सेशन में we'll start with a very important library, ठीक है? That is pandas. So मैं देखते हैं आज हम क्या टच करेंगे in our agenda. We'll touch what is pandas and why do you even need panda, right? एक ऑब्वियसली हमारे पास इतने सारे लाइब्रेरी है, कुछ ना कुछ पर्पस सब सॉल्व करते होंगे, तो यू ऑलवेज नीड समथिंग, अ रीजन, जिसको हम देखेंगे. सेकंड इज वील टच कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स विद व्हिच pandas एक्सेप्ट, बिकॉज जब हम डेटा का बात करते हैं तो डेटा को हमको कहीं स्टोर करना होगा ऑब्वियसली, राइट? डेटा कहीं ना कहीं तो यस डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, और जब डेटा स्टोर होगा तो स्टोर करने के लिए मेरे को कुछ चाहिए, कुछ तरीका चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको मल्टीपल बुक्स दे दूं मुस्कान, और मैं बोलूं कि इसको सबसे कम जगह में रखना है, तो तुम इसको कैसे करोगी? ऐसे एक स्टैक बना दोगी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, राइट? हाँ राइट. हाँ अगर मैं तुमको बोलूं कि इस तरह से रख दो, एक पूरा एक इस तरह से रख दो जिसमें हमको उसको फेच करना बहुत इजी हो जाए, ठीक है? तुम एक शेल्फ में जैसे रखते हैं एक क्यू में, ऐसे रख दोगी. यस अगर मैं बोलूं कि अ, एक बुक से रिलेटेड जो कोई दूसरा बुक है उन लोगों को साथ में रखो, तो ठीक है, तुम मल्टीपल डिवीजन बना दोगी जिसमें एक तरह की बुक एक साथ, दूसरे तरह की बुक दूसरे साथ, राइट? ऐसे तुम कर सकती हो. यस तो हम लोग देखेंगे कौन डेटा स्ट्रक्चर हम टच करेंगे, देन वी विल लर्न कि हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं पांडास में, ठीक है? लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स पे हम परफॉर्म करेंगे, बट विल सी. So let's start with ओके the pretty obvious question. What is pandas and why should you even learn it? और how वाला part हम इसके आगे touch करेंगे, how we will perform operations and all that. So pandas is very simple. एक fundamental package है for data analytics. तो आपके पास कुछ डेटा होगा and you want to get something out of it. डेटा से तुम्हें कुछ inference draw करना होगा, कुछ calculations perform करने होंगे. So पांडास के साथ तुम वो कर सकते हो. अब क्यों तुमको पांडास यूज करना है? एकदम एक लाइन का आंसर है, इट इज वेरी इजी. इट वर्क्स ग्रेट विद डेटास. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है इसके बारे में. हाँ, अगर तुम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगी तो उसको बनाया गया था टू प्ले विद डेटास बाय वेस्ट मैकेंजी 1990s के मतलब तुम एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट तुम गूगल कर सकती हो. सो अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन करूं कि व्हाई डू वी इवन नीड डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, इसका थोड़ा फाउंडेशन देखते हैं. सो ऐसे एज्यूम करते हैं कि एक स्कूल में एक स्कूल में मैं एक प्रिंसिपल हूँ, राइट? एक स्कूल में मैं एक प्रिंसिपल हूँ, और ओके मेरे को ये चेक करना है कि मेरे स्कूल का प्रोग्रेस कैसा है इन बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है? मेरा एम है टू चेक मेरा स्कूल का प्रोग्रेस कैसा है इन बोर्ड्स एग्जाम. तो मैंने क्या किया कि मेरे पास लेट्स से दो सेक्शन है और हर एक सेक्शन में 20-20 बच्चे हैं, ठीक है? हर एक सेक्शन में 20-20 बच्चे हैं. तो मैंने ये यस काम किया कि मैंने लेट्स से 5 साल में हर एक सेक्शन में जितने बच्चे हैं सबका 10th का मार्क्स ले लिया या परसेंटेज ले लिया, जो भी जिससे तुमको कैलकुलेट करना है. अब ये मेरे पास एक रॉ डेटा है, राइट? यस although it makes sense कि किसी का 90% आया, किसी का 80% आया, समथिंग लाइक दैट, बट इट इज स्टिल अ रॉ डेटा बिकॉज हमको पता नहीं हम उस डेटा का करें क्या, राइट? सो यस नाउ भैया द क्वेश्चन इज, मुस्कान ने एक बहुत अच्छा काम किया कि मुस्कान ने बोला कि ठीक है संजय भैया, आप एक काम कीजिए, आप ये डेटा मेरे को दे दीजिए. मैं क्या करती हूँ कि इस पूरे 5 साल में हर एक क्लास में मतलब टोटल हम एवरेज देखते हैं हर एक 5 साल में, और उस एवरेज का हम ट्रेंड देखते हैं, क्या हमारे स्कूल का एवरेज का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यानी कि हर प्रोग्रेसिव ईयर में हमारा एवरेज ऊपर बढ़ रहा है, या वो नीचे आ रहा है, या फिर स्टैग्नेंट है. तो लेट्स से फॉर हाइपोथेटिकली कि वो ऊपर गया, तो ठीक है, हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि वी आर ऑन अ राइट पाथ, हम सही कर रहे हैं, पढ़ाने में बच्चा समझ पा रहा है, हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा है, डाउट
रिड्रेसल अच्छा है, whatever। ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किए कि ठीक है, वी आर गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन। अगर लेट्स से इसका ऑपोजिट हुआ कि डेटा कह रहा है कि हमारे स्कूल का एवरेज नीचे जा रहा है, ठीक है, मैं वहां से कुछ डिसीजन लूंगा कि मेरे को फैकल्टी का ट्रेनिंग कराना है, या फिर आई विल लाइक टू फाइंड आउट क्यों ये नीचे जा रहा है। स्कूल के साइड से दिक्कत है, फैकल्टी के साइड से दिक्कत है, स्टूडेंट के साइड से दिक्कत है, कोई मतलब व्हाट आई मीन टू से हमारे पास कुछ रॉ डेटा था जो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, एंड नाउ आई एम डूइंग व्हाट, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड सम इन्फेरेंस जिससे मैं अपना डिसीजन मेकिंग करूंगा। कुछ मेक सेंस, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेक सेंस Yes. श्रेया, यश, शशांक, मोहम्मद? If yes, give me a thumbs up. Perfect. Perfect. So pandas is what? तुम्हारे पास बहुत डेटा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, तुम्हारे अपने सिस्टम में, एंड नाउ इफ आई वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट डेटा, ठीक है, सो वी विल यूज दिस लाइब्रेरी। जैसे मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था, मेरे पास 5 साल का है, हर एक साल में हर एक सेक्शन में कितने बच्चे थे, और हर एक बच्चे का कितना मार्क्स आया, ऐसे मेरे पास रॉ डेटा पड़ा हुआ है। बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद द डेटा? हमको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो जैसे यहाँ पे मुस्कान आई मेरे पास असिस्टेंस के लिए कि आप मेरे को दे दीजिए, मैं ये कर देती हूँ, तो सेम वे pandas इज देयर टू हेल्प यू आउट विद दिस थिंग। वन मोर थिंग, अब जब तुम ये पूछे कि हम मुझे इंटरफेरेंस ड्रॉ करना है, तो वी कैन ऑल्सो, अगर हमको कैलकुलेशन ही परफॉर्म करना है डेटा में, तो वी कैन ऑल्सो यूज नमपाई। हम नमपाई भी यूज कर सकते हैं, राइट? Yes. नमपाई भी यूज कर सकते हैं, बट देखा ये गया है कि इफ यू आर वर्किंग विथ सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, इफ यू आर वर्किंग विथ सम काइंड ऑफ नंबर्स, देन गोइंग विथ numpy इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, नंबर्स का है, मैं पांडा ये सब नहीं करूंगा, मैं सीधे numpy यूज करके आई विल गेट व्हाटएवर आई वांट। वन अप्रोच इज दिस, यस करेक्ट, तुम कर सकते हो, बट व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट हैव सम सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा? What would happen if you don't have some sort of numerical data then? डेटा तो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी तुम्हारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड, इट कुड बी अ बुक, इट कुड बी लाइक अ स्प्रेडशीट जिसमें तुमने अपना पूरा मंथ का बजट कैलकुलेट किया, व्हाटएवर, राइट? कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, टेक्सचुअल डेटा का भी, न्यूमेरिकल डेटा का भी, पिक्चर्स, कुछ भी। मेक सेंस? डेटा डेटा पे हमने कोई कंस्ट्रेंट थोड़ी दिया हुआ है कि सिर्फ एक ही तरह का Yes. होगा कुछ, यू कैन हैव एनीथिंग इन डेटा। Now to get you that flexibility to work with any kind of data, अगर नंबर हुआ तो we can go with numpy obviously, अगर नंबर नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे? In order to answer that question, West McKinsey have this pandas in order to do what? In order to analyze your data. If it is numerical data, yes, we can do it. We can still perform operations. If it is not, we can still do whatever I want. ठीक है? So this was more or less your ब्रीफ इंट्रो। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि तुमको जानने का जरूरत है। हाँ, इफ यू आस्क मी व्हाट दिस पांडास मीन, इट मींस पैनल डेटा सिस्टम, PAN, पैनल डेटा सिस्टम, DS। मेक सेंस? बस अब ये ऐसे ही है। दिस इज द डेफिनेशन ही चोज बिकॉज ही बिल्ट इट। ऐसा कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और इससे हमको बस अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए कि लाइक वेन एवर ही वॉज बिल्डिंग दिस स्टफ, उनका साइकोलॉजी क्या रहा होगा कि व्हाई डिड ही इवन मेड दिस, लाइक एक 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 कोई प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया होगा, उसका सोल्यूशन दिस वाज द पांडास। द प्रॉब्लम वाज कि यू आर नॉट एबल टू वर्क pretty well with a data which is not in the numerical format. Pretty simple. So in order to deal with it, we have this pandas. So let us learn what are the different way in which we can store data in some sort of storage class or structures. We'll call them objects here. So in pandas, you have two basic objects. One is known as series, another one is known as data frames. Pretty straightforward definition. A series is a 1D array. You see, अगर ये पूरा एक table है, if this whole thing is a table with some rows and some columns as usual,
अगर उसमें से मैं कोई एक एरे ले लिया, चाहे हॉरिजॉन्टली लो या डायगोनली लो, दैट इज अपॉन यू। मोस्टली हम हॉरिजॉन्टली नहीं कंसिडर करते हैं, वी टेक इट वर्टिकली, बिकॉज हम आगे देखेंगे व्हेन वी प्रिंट सम सीरीज ऑब्जेक्ट, दीज आर स्टोर्ड वर्टिकली. So in order to define what a series object is, it is an 1D array. एक 1D array होता है जिसमें you can store some data, and corresponding to every data you have few index. Or data frame is what? It is just a 2D array. You will have a column dimension, you have a row dimension. So dimension कितना हो जाएगा data frame का? तो obviously pretty common. To explain it in much depth, let me head over to my OneNote so that I can explain it थोड़ा अच्छे से. We'll learn everything. बहुत easy है, ऐसा कुछ इसमें छेड़छाड़ हम करेंगे नहीं. So I guess clear है ये सबको? Is Yes, it clear? Bhaiya. Is it clear? So let's begin with some data structures जो हम pandas में use करेंगे. The first data structure is your series object, right? This is the very first thing which we'll be discussing. So as I said, what this is. So ठीक है, this is a 1D array. Makes sense? We have some index for each data. Obviously, we would be having some index. Now let's थोड़ा सा इसको visualize करते हैं कि what do I mean by a 1D array and what do I mean by this index for each data. So you see, let's say कि मेरे पास एक data है. Let's say मेरे पास एक data है of some alphabets. So let's say I have this data. What I said is let's have some data A, B, C and so on. ठीक है? I have this data. So what I just said is a series object is a 1D array. So this whole thing, can I say it as an array which is in one dimension? Obviously, एक dimension में you're only having one attribute. So corresponding to this whole thing, my color definition is correct. I would be having some data which is stored in some one-dimensional array. Now the second part goes, you would be having some index for each data. ठीक है? As I said, I would be having some index. So let's say our index, zero-based indexing goes for Python. So we can 0, 1, 2 and so on. So एक idea मिला what this series object is. We would be having some like, इसको एक intuitively you can say intuitively it is a column. As simple as that. ना कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा difficult भी नहीं, बहुत ज्यादा. Let's discuss what would happen if I stack multiple series object. So we have this data structure known as data frame. What a data frame is, it is a 2D array. So you would be having some rows, you would be having some column. Basically, you would be having two axes. And again, it would be having some index, right? But more important, क्योंकि एक 2D array है, so we would be having some rows and columns. Let's see what do I mean by this. Let's say you have this name column, you have this age column, you have your marks column. Let's say there is this student A, there is this student B, there is this student C. Age मान लो 18 है, 20 है, 17 है. Let's say इसका marks 50 है, इसका 82 है, इसका 96 है. ठीक है? So you see in this diagram, sorry, in this table, क्या ये table है? Obviously it is a table. So I have few columns. Like name is a column, age is a column, marks is a column. ठीक है? हर एक column is itself a series object.
हर एक column is itself a series object. Make sense? Marks is itself a series object. Your age is a series object. Yes. Your name is a series object. ठीक है? और लेट्स से लेट अस डू वन मोर. हाँ ठीक है, इतना सा आई गेस इट वाज क्लियर. तो ये तो हुआ पहला चीज, इट इज अ 2D array. व्हाट अबाउट द इंडेक्स? ठीक है, देयर इज अ पर्टिकुलर इंडेक्स. लेट्स से zero based indexing. You can 0 1 2 so on, it can go to whatever length you want. So एक चीज मैंने देखा कि what is the difference between a series object and a data frame object. क्लियर? ऊपर से एक आइडिया मिला क्या होता है? Yes. So we can say a series object is a column, right? ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो. जनरली मैं बोल रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस वर्ड जनरली बिकॉज हम मल्टीपल यूज केस देखेंगे अभी. एंड नाउ लेट्स डिस्कस दिस डेटा फ्रेम. So what this data frame is, you can consider it as a table. Make sense? ऊपर से आइडिया मिल गया कि एक्चुअली है क्या. आयुष, शशांक, मोहम्मद, एक आइडिया मिला क्या है. सो लेट्स गो आउट एंड डिस्कस कि ये तो एक ऊपर से आइडिया मिलेगा. लेट अस एक्चुअली डाइव डीप टू अंडरस्टैंड द कोर लेवल डिफरेंसेस जो इन दोनों को अलग कर रहा है. ठीक है, तो लेट्स डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम. काफी है. ठीक है, so let us say I have a series object here and I have a data frame object here. How do we differentiate it? पहला जो हमने केस लिया कि this is one dimensional, right? पहला difference. And this thing is two dimensional. Make sense? Pretty straightforward. The series object is a one dimensional object. The data frame is a two dimensional object. Now when we are trying to deal with series object, as I said, it is a 1D array. It is a 1D array. So by the basic definition of an array, can we say what do I mean by homogeneous? Is it can store data of same type. If it is storing some numbers, it will only store numbers. If it is storing some string, it can only store string. If it is storing some sort of boolean values or characters, whatever you want. So throughout the series object, you can store only one type of data. Let me highlight this thing. It is homogeneous. So obviously इसका एक contrary होगा यहाँ पे. It is heterogeneous. ठीक है? Make sense? It is heterogeneous. How? It can store any type of data. See, you don't have to mistake it like that. कि, for example, यहाँ मैं explain कर दे रहा हूँ. What do I mean by that? Let's have a series object. ठीक है? So if I want to store some, is it valid? क्या ये valid है? Yes, this is valid because if we try to find out कि इस सबका type क्या है, तो these are all essentially strings, right? तो एक data type सबके लिए है. Can we store something like this? So no, I cannot store like this.
but for data frame object you can do it. Now this is two differences. There is one more interesting difference, that is, let's talk about mutability. So series object are obviously mutable. Obviously they are mutable, but in what sense they are mutable? Can see mutability का दो ही चीज हम अपने स्कोप में रखेंगे. One is value mutable and the other thing is size mutable. What do I mean by value mutable? कि कोई वैल्यू हमने पहले स्टोर करके रखी है, अब नाउ आई वांट टू चेंज दैट वैल्यू. जैसे सेट्स के केस में हमने देखा, सेट्स आर नॉट म्यूटेबल, दे आर नॉट वैल्यू म्यूटेबल. एक बार जब हमने सेट में वैल्यू डाल दी, आई कैन नॉट चेंज इट थ्रू आउट इट्स स्कोप. So can we say series are value mutable? Yes, they are value mutable. We can change whatever value we are storing. Same goes for your data frame. They are value mutable. But let's talk about size. What do I mean by this size? Let's say initially we have some 10 elements in a series object. Can we make it 9? बाद में कभी अगर हमको एक हटाने का मन हुआ, can we make it? We cannot. So these are immutable for the parameter size. These are immutable for size. That means once you have created a series object, कुछ size हो सकता है उसका. So throughout the scope of its existence, you cannot change it. 10 है तो थ्रू आउट इट्स स्कोप वो 10 रहेगा. हाँ, ये कर सकते हो कि तुम दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें उसका डेटा कॉपी कर दो, फिर तुम कुछ अलग से ऐड करो. तो यू कैन हैव समथिंग 10 प्लस समथिंग और 10 माइनस समथिंग, यू कैन डू इट. बट अगर मैं सिर्फ एक सीरीज ऑब्जेक्ट का बात करूं तो यू कैन नॉट डू इट. लेकिन हाँ, डेटा फ्रेम इज लाइक दीज आर ऑल्सो म्यूटेबल. These are also mutable for size. I guess थोड़ा सा क्लैरिटी मिला आप लोग को what this thing is or what this is not. Like ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हम जो आगे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, so more or less we would be using these features only कि if we अगर let's say मेरे पास डेटा है, डेटा में multiple type of data types हैं, तो I can go with data frame. अगर नहीं है तो I can simply go with series, no issues. अगर मैं चाहता हूँ कि यूजर, अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि यूजर वैल्यू के साथ तो छेड़छाड़ कर ले लेकिन लेंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करे, तो आई कैन गो विद सीरीज. अगर हम वो फ्रीडम देना चाहते हैं, वी कैन गो विद डेटा फ्रेम. व्हाटएवर मोरलेस हम जो भी यूज करेंगे अभी आगे, वी वुड बी यूजिंग दीज ओनली 4 प्रॉपर्टीज मोर और लेस. देन वील फॉर्मली स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन. बिफोर लेट मी ऑल्सो टेल यू थोड़ा सा डेप्थ में we'll see. Let's talk about पहला, as usual, series data structure or series object, you can say. Let us try to see कि what are the different components we have. What are the different components we have for a series data structure? So there are 2 components. So the very first component is you have some array of data. Obviously, सबसे ऑब्वियस चीज है कि भैया मेरे पास डेटा ही नहीं होगा तो मैं क्या स्टोर करूंगा. एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव अ corresponding डेटा तो मैंने बना लिया. अब बाय डेफिनेशन मैंने जो बताया था, इट इज अ 1D array which stores data for corresponding indexes. So obviously I would need some data and its index, right? Make sense? थोड़ा make sense? अब now since this is an array, I can have any kind of index, be it numerics, be it alphanumerics, whatever you may wish. कुछ भी तुम index में डाल सकते हो. Oh,
अगर तुमने नहीं इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंडेक्स चाह रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट we'll use zero based indexing. We'll start with 0 for the first element and go on till n minus 1 l data. So I guess more or less this was clear, right? Can I expect कि जितना मैंने इतना पोर्शन कवर किया ये आइडिया मिल गया होगा क्या है क्या नहीं है? Perfect. So let me share you with this documentation जो तुम्हारे pinned part में भी है, and sharing it here only. You kindly open this thing and let me head over to my VS Code. Let me head over to my VS Code. Is it visible to you all? Is it visible to you all? सबने ओपन कर लिया? If you have opened it, give me a thumbs up. If you have opened it. आयुष, मुस्कान ने कर लिया. और इनकेस किसी को दिक्कत आ रहा है इसको ओपन करने में, मैंने पिंड कमेंट पिंड वाले पार्ट में चार्ट में देखो 4 दिया है. कोई भी तुम ओपन कर सकते हो, सब में सेम मटेरियल है. You can open anyone as you like. No issues for that. संजय, हाँ, ये बोल रहे थे यार, मेरे में एक बार बार एरर आ रहा है, लाइक पांडास हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम. कल से आ रहा है, data लाइक. you have to like data and capital F you have to use it. अच्छा, ठीक है. चेक चेक करो एक बार. सी मैं वो इनिशियलाइजेशन पार्ट में आऊंगा बिकॉज हम ऐसे स्टार्ट करते हैं डेटा एंड देन फ्रेम, ऐसे लिखते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम. बस ठीक है. आई गेस सबने ओपन कर लिया. शुड वी स्टार्ट? So obviously this pandas is something which is not with your which does not come with your Python. ये एक external library है. तो in order to use an external library, we have seen how do we import external library. We use import, then whatever the name is as an alias we use pd. If you're using your let's say VS Code or something which is in your own system, I request you to open your terminal and kindly write this command: pip install pandas. If you do it, it will install it in your system only. मेरे system में already है, so that is what it is saying, requirement already satisfied. But in case if you are using some online IDE, you can go to their terminal and write this thing. Otherwise, you can simply import it. अगर तुम Jupyter notebook यूज कर रहे हो या फिर Google Colab यूज कर रहे हो, you can simply import it. So when I import this thing, my pandas is ready and now I can use it. So let's start with very first topic. Let us create some series object. Create series object. So in order to create some object, obviously we would need some data. Make sense? We would need some data, right? Okay. So in order to use this thing, I hope तुम लोग यार रुको, मैं काम कर रहा हूँ तो अपना documentation open कर देता हूँ. Just a second, give me a संजय, ये नहीं हो रहा है, सीरीज में भी नहीं हो रहा है, डेटा फ्रेम में भी यही एरर दिखा रहा है, नो एट्रीब्यूट. मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना. आई विल पर्सनली से इट. अभी के लिए जस्ट अ सेकेंड. लेट मी शेयर माय विंडो. Just tell me if it is visible or not. Is it visible? Okay. So this is your original documentation, and let's see how we can actually make use of it. Documentation से सीधे सीधे मैं भी assume कर रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं आता है, and let's see how we can read documentation. So it says get started. ठीक है. The very first thing we did was pip install pandas.
if you're using it in your own system. Okay, and let's see introduction. We don't want introduction. We don't want this. If you want to read this thing, you can read, no issues. But let's straight away, let's get to use it. Installation, this is. Let's start with user guide. We have this 10-minute to pandas. Okay. So very first thing we have seen, in order to use it, first we have to import it. Okay. This is your original library, pandas. And in order to skip पूरा उसको लिखना, we can simply use some shortcuts or aliases. These are just to make sure कि तुम उतना बड़ा कुछ नहीं लिखो. Okay. So let's start how to create an object creation. So you're creating you can create a series by passing values and letting pandas create by default integer indexes. What you can say, I can simply head out to my terminal. I can simply say, ठीक है वो कुछ भी हमको create करना है as a series object. How can I do it? Within this command pd.series, make sure S capital. I can pass any kind of data I want. 1, 2, 3, 4, 5, or let's keep it different. A, B, C, let's do it. And let's print this thing. So you see your pandas series data structure, or you can say the data object has been created. We are storing string. Your string is there, and corresponding to every value you have a predefined, as it says, create a default index, integer index. So obviously using zero-based indexing, you got this. अब एक तरीका है कि सिंपली यहाँ पास कर दो, और यू कैन से कि ठीक है एक काम करते हैं, इसको हम कहीं बाहर रखते हैं बिकॉज हो सकता है हम इसको कहीं और यूज करें, एंड विल सिंपली पास एल हियर. ठीक है, if you'll do it, you will still get this. Can we store something like this? Yes, you can store something like that. So this was more about of creation. How do we create it? Or you can also use list comprehension to actually create some data. That is your part, because ultimately we are dealing with lists here. Now let's do what you can use that range. Okay, that is something I'm giving it for your part. So this was what, in order to create something, what you have to do, write any Python sequence. Okay. It could be a dictionary, whatever you want. That is something you work with. Now let's do what? Let's say I have this tuple 1, 2, 3, 4, 5. Can I print it? Yes, I can do it. I can do it. No issues with that. Clear hua? How do we create a series object? Was it clear? Yash, Mohammed, Sashank, Muskan. Bhaiya, what's the meaning of D type int 64? Data type. Okay. 64-bit integer. So, Integer भी so दो it तरह will से होता है. so it will be get printed automatically. हमें उससे पूछने की जरूरत नहीं है ना कि हमें डेटा टाइप बताओ कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ये अपने आप हो जाएगा. इसमें तो अपने आप हो रहा है. यू कैन यूज एनी अदर टर्मिनल. देखो उसमें होता है या नहीं. यूजिंग गूगल को आप डू लेट मी नो कि होता है नहीं, बिकॉज एनाकोंडा में तो होता है, जुपिटर नोटबुक में भी होता है, बट ठीक है अभी हम यहीं पर रहते हैं. नाउ लेट्स डू व्हाट. ये तो हमने देखा अबाउट हाउ डू वी क्रिएट सम डेटा. अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंडेक्स है. लेट्स डू विद सम नेम्स हियर. Let's say we have this student. Let's have some names. Let's say Yash. Let's say Ayush. Let's say Month. Let's say Sisha. So this was my dictionary in which I had these names. Now I want was कि obviously let us assume कि एक क्लास का एक सिनारियो है, तो ऑब्वियसली एक कुछ रोल नंबर असाइन होगा ही हर एक करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट के. मेक सेंस. Let us have a dictionary in this format. Key value pairs.
So we have made a dictionary in which 1, 2, 3, 4 are different key values here. Key, and we have some values like IU format. And let's do what? Let's print this thing. देखते हैं क्या होता है. So you see, in this dictionary, whatever was the key that was used as your index, and whatever was your value, you have this. What would happen if I did not assign some key values? क्या हम उस केस में हम assign कर सकते थे कुछ? Let's see if we would be able to do it or not. Now we have a dictionary, list in which we have few names, and let's print this thing. If I print it, I got the names, but मेरा जो index था, it is not what I want. So what we can do is, see, the actual syntax of this dot series function is something like data, comma, index. Whatever you want as data, you pass it here. And whatever you want to print it as the index, let's have some index A, B, C, D. So if I run this command, you see I get this. Whatever I have assigned in the index part, I got it here. Whatever was my data part, I got it here. You can also do it like this. You can switch it. That is something to play around. I want my student as my index. My mistake. And instead of data, I don't want that. I want this list. Let's run this thing. आया सबका? आया सबका? Let's say कि we are having only 4 data here. What would happen अगर ऐसे 100, 200, 300 हो? So you can have something like this range function. You can go for 0 to, when you assign it after an index, you will get this value error. Since we are having only 4 data, so you can use range function to get this thing. Make sense? आया सबका? आया सबका? There is one more thing. Can we use numpy with this? Yes, you can use numpy. Import numpy as np. We can create some data using numpy. We can say, let's say something like np dot space, and I want to create data between 1 to 4. I want data between this range, and okay, let me run this. I have my data. You can change. Okay, let's do this thing. Let me make it thoda sa. Acha, in linspace, I guess when I taught you this thing, linspace में we assigned a lower bound and an upper bound, and we differentiate it using a class number in which we want कि इन दोनों upper bound and lower bound के बीच कितने numbers आने चाहिए. So I said let us say कि let us take a higher value, 24, 65, and let's say I have something like कितने values बीच में रखें? Let's say 5 values. And if I
पहले हमको यहाँ बताना दो data is equals to student. So I have these 5 values with me. So you can actually combine pandas with data, this numpy thing. You can work with different functions, you can correlate it, you can combine it, and you can test it out by yourself. एक hint मैंने दिया. You can use random, whatever you want to get some data. Because हो सकता है हमको कुछ data generate करना हो, वो सब data अब मैं manually type नहीं करूँ. ऐसा भी हो सकता है, right? जरूरी नहीं है कि मैं data जो रखूँ. Let's say अगर 1 million बच्चे लोग का कुछ roll number generate करना है starting from 1, तो मैं 1 से लेके 1 million तक टाइप थोड़ी करने बैठ जाऊंगा. I can use numpy, I can use for loop. That is purely yours. We can also practice with string to get some numbers, but I guess more or less इतना part clear हो गया, right? How do we create a series object? How do we play with index? What is the basic syntax of dot series? I guess more or less इतना part clear हो गया, right? So there is this one more interesting thing which is known as NaN, which is known as not a number, something like np dot, you can work with it, np dot nan. This just symbolizes a null value. This is just for storing some null values. For example, let us say we have a student data, and in that data we are storing student name, student के fathers का name, student का mothers का name, and let's say for example there is some student जिसके father नहीं है और जिसकी mother नहीं है. So वहाँ पे data मेरे को blank रखना होगा. अब now in order to substitute with that blank, I can use np.nan there to actually get this empty value or null value. हाँ, इसका कुछ additional functionality ये होता है कि we can actually replace it for missing data. कोई data miss कर रहा है, कोई data है नहीं वहाँ पे. इसको अब थोड़ा अच्छे से सीखेंगे अभी आगे. एक जगह पे मैं वो portion रखा हुआ हूँ, वहाँ पे we'll see what is the actual functionality of this np.nan or basically nan. So this was more about this thing. Let us do what? Let us learn how to use some mathematical functions in this dot series when we are dealing with series. Let's say I have some index, and for index what I said, let us say let me simply do what? Let me multiply it by something. Can we do it? Let's see. Can we do it or not? Yes, I can perform some mathematical functions corresponding to the data type. अगर ये एक string होता तो मेरे पास वो string 2 बार print होके आ जाता. More or less idea मिला कि what this series object is. Now let's build a program. चलो अच्छा रुको, इसमें मैं कुछ और बताता हूँ. Let us store it in X. Let us see what are the different attributes we can make use of it. So you can have something known as x dot index. If I do this, I'll get my index. We'll start with 0. We'll stop at 5. Something like that. If you use this parenthesis, you will get this type error. So in order to avoid that, don't use it. Simply write the attribute whatever you want. Get this. Let's say we have some values. See, you get this values. So these are all in this documentation only. You'll get his series. So let me push. You see, you have this data. इतना portion मैंने clear कर लिया. You will have some attributes. ठीक है? Let's see, you have this name attribute. अच्छा, ठीक है. Let's learn some more attributes here. Let me close this thing. Let's stick to this. You can have some values. So you see, you get all the values which are stored here. You can get the shape. What is the shape of my series object? So we are having 5 values, and since we don't have any column, it is empty. Sorry,
let us do something known as size. So we are having 5 values. We got the size. Let us say what is the dimension. Obviously, it is a series object, so we would be having one dimension. Let's see कि given ऐसा भी हो सकता है कि तुमको कोई डेटा दे दे और वो डेटा खाली हो, तुम अब चेक करने नहीं जाओ. Can we do it? Let's see. We have this empty attribute, so it just says कि it is false because we have something in our series object. अगर वो खाली होता तो मेरे को false true मिल जाता. We can have something like has nans. अगर उसमें not has nans, so false because we don't have any, not a number. Can we have something like uh, we can have something like data types. D type is a float of 64-bit. So these are the attributes you can play around with. I'll skipping this part. More or less कैसे use करना है ये clear हुआ. थोड़ा थोड़ा. We can have something like head function. We can have something as head function. तुमको ऊपर ऊपर से मिल जाएगा कि एक्चुअली डेटा में क्या है. In this you can assign कि तुमको कितने rows तक देखना है. First two values you get, you can have something as tail function. You'll see data from the reverse end. If I want to see the whole thing, I can simply initialize nothing here. You can get the entire data. कभी कभी होता है हम लोगों को एक्चुअली देखना होता है कि डेटा में है क्या. एंड आई डोंट वांट टू सी द होल डेटाबेस बिकॉज होल डेटा सेट में हो सकता है मिलियंस ऑफ डेटा हो. ऑब्वियसली उसको जब मैं ओपन करूंगा तो कुछ प्रोसेसिंग पावर मेरा लग रहा है लैपटॉप का या कुछ टाइम लग रहा है. राइट. अब बस मेरे को ऊपर से 2-3 से डेटा से बस मतलब है हम स्टोर क्या कर रहे हैं. राइट. क्या वो करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं. सो मोर लेस वहां पे हम हेड और टेल फंक्शन यूज करेंगे. बट आई गेस इतना पार्ट कैन आई एक्सपेक्ट की इज इट क्लियर. कैन आई एक्सपेक्ट इज इट क्लियर. कैन आई एक्सपेक्ट इज इट क्लियर or not. Can we use some functions like we did in NumPy? Like there was this function known as max function. So if you use some max, you get everything. Sorry. If you use this max function, you'll get the maximum value of that series object. If we have something as min function, get the minimum value. If you want something mathematical, let's say we want to find mean. The mean is 13.5. If you want to find some median or mode, whatever you like. So corresponding to each value, you have this mode or something. So you see there are different operations you can perform. Statistical operations, probability. You can have something as simple as describe, which will give me a basic detail like there are 5 elements. The mean is this, the standard deviation is this, the minimum value is this, the first quartile is this, the second quartile is this, third quartile is this, maximum value is this, and the total what is the data type. So we have these different functions. We can use it. It is all in the reference documentation. It is all that कि हमको जो requirement जब होगा we can simply refer to the documentation or you are just one Google away. एक Google करोगे you will get everything. Make sense? Can we make up? Can we? Let me tell you about this arithmetic operations. Some arithmetic operations. Let it be student 1. Let it be student 2. Okay. So let's print whole thing. So can we have student 2? If I do it, I'll get some values. So what I said is, okay, let's have some stud underscore 1. Let us create some series object and let us perform something which let it be student 1. Sorry, let it be student 1. Let's do for student 2. And let's print this whole thing.
let's print student1. Let's print start2. Print start underscore. So you see, I get some values here. Can we perform some kind of mathematical operations? Yes, we can do it, obviously. But my question to you is, will these mathematical operations be a vector operation or it would be not? क्या ये वेक्टर ऑपरेशन होगा, ये वेक्टर ऑपरेशन नहीं होगा? लेट मी फर्स्ट टेल यू वेक्टर ऑपरेशन होता क्या है. वेक्टर ऑपरेशन क्या होता है? लेट्स सी, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है. हमने लिस्ट में देखा कि इफ वी वांट टू डू सम ऑपरेशंस, लेट्स से स्क्वायर करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, व्हाट वी वर डूइंग, हम लिस्ट में इटरेट करते हैं, एक एक एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, वी एक्सट्रैक्ट दैट एलिमेंट, वी एक्सेस दैट एलिमेंट, फिर हम उसमें जो ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन करते हैं और देन वी स्टोर इट समवेयर. ऐसे ही करते थे. लेट्स से हमको लिस्ट में डबल करना, हर एक वैल्यू स्टार्ट किया, डबल किया, या तो वापस उसी लिस्ट में स्टोर कर दिया या इसको प्रिंट कर दिया, ऐसे करते थे, राइट? So what we are saying is, in order to do some operation, we are not performing it एक बार में, हम अलग अलग करके तोड़ के कर रहे हैं उसको. करेक्ट? एक डेटा एक बार में उठाया, उसमें ऑपरेशन किया, फिर दूसरा डेटा उठाया, उसमें ऑपरेशन किया. बट इफ आई प्रिंट समथिंग लाइक दिस, मैंने एक बार सिर्फ एक कमांड दिया एंड आई वाज एबल टू गेट व्हाटएवर ऑपरेशन आई एम सेइंग एक बार में फॉर एवरी डेटा. 4 डेटा है, चारों डेटा के लिए मेरे पास है यहाँ पे. If I want to do some other operation, let's say plus, yes, I can do it. Now the values have been added एक बार में. Make sense? Make sense? अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है, कि whatever operation we are performing, it is happening at an index level. What do I mean by this? कि फर्स्ट इंडेक्स का ऑपरेशन फर्स्ट इंडेक्स के साथ होगा, सेकंड इंडेक्स का ऑपरेशन सेकंड इंडेक्स के साथ होगा. 24 इज एडेड टू 24 बिकॉज दोनों का इंडेक्स सेम है. ओके, लेट मी प्रिंट दिस थिंग. यू सी, मेरा पहला सीरीज ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट ये है. तो वी आर डूइंग द कैलकुलेशन एट एन इंडेक्स लेवल कि फर्स्ट इंडेक्स या लेट्स से जीरोथ इंडेक्स का वैल्यू जो है वो जीरोथ इंडेक्स के साथ ऐड होगा, फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स के साथ ऐड होगा. ऐसा नहीं कर सकते अभी इंट्यूटिव लेवल पे कि हम इसके कुछ वैल्यू को इस तरह के किसी वैल्यू के साथ करें, वो भी अभी देखेंगे कैसे एक्सेस करते हैं. बट मोर लेस एक आइडिया मिला कि वॉट एवर ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग, ए इट इज एन वेक्टर ऑपरेशन एंड सेकेंड इट हैपेंस एट एन इंडेक्स लेवल. मेक सेंस? Make sense? Make sense? So what would happen if I want to extract something? Can I extract it? Can I have something like start2 of some index, let's say 1? Yes, you can have this. अगर यहाँ पे कोई string होता तो you can simply write it within quotes and you can get the value. बहुत सिंपल है. जब हमने लिस्ट में भी देखा, हम जब भी एक्सेस करते हैं वी यूज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल. पहले हम उस घर में जाते हैं जहां वो डेटा स्टोर है, वो घर यहाँ है, फिर हम उस पर्टिकुलर फ्लोर पे जाते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाते हैं, तो दैट इंडेक्स वी कैन असाइन हियर, कैन गेट द वैल्यू. वाज इट क्लियर? वाज इट क्लियर? Perfect. So let's should we do some some programming? एक छोटा सा कोड बिल्ड करें. ठीक है, लेट मी एक्चुअली गिव यू दैट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन टू फ्रेंचाइज ठीक है. वी हैव अ स्कूल जिसके 2 फ्रेंचाइजी हैं और हर एक फ्रेंचाइजी में वी टीच साइंस, वी टीच कॉमर्स एंड वी टीच ह्यूमैनिटीज. ठीक है. ऑब्वियसली अब हर एक
ऑब्वियसली हर एक स्कूल में हर एक सेक्शन, जैसे 3 स्ट्रीम्स है तो कुछ बच्चे होंगे, साइंस में कुछ बच्चे होंगे, कॉमर्स में कुछ बच्चे होंगे, ह्यूमैनिटीज में कुछ बच्चे होंगे, राइट? ठीक है, काउंट फॉर this is your task. What do I mean by this is, let's say we have something like this कि we have franchisee A, इस franchisee में let's say there are 60 students in science, let's say there are 30 students in commerce, and there are 15 students in humanities. Let us say we have franchisee B. So in this franchisee, we will also be having some values. Let's say कुछ change कर देता अपने से 50, 70 student, 45 student and 19 student. ऐसे दो franchisees हैं एक स्कूल के. My aim is to get me कि साइंस में टोटल कितने बच्चे हैं उस पूरे स्कूल में, यानी दोनों फ्रेंचाइजी को कंबाइन करके हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम एंड एज वेल. सो ठीक है, लेट्स डू दिस. सो व्हाट आई सेड इज कि ठीक है, लेट्स डू व्हाट, मैंने पांडास इंपोर्ट कर लिया, आई डिड इट. लेट्स डू व्हाट, लेट अस क्रिएट सम डेटा. So let's say I have this franchisee 1. So I said pd dot series, right? Now I want some data. So my data is as simple as that: 60, 30, 15. And what are my indexes? You can build this in your dictionary also. You can use it by dictionary itself. And my second thing is commerce, and then we have humanities. This was my first data. Let us replicate it for some other franchise. We can change with data. We have 70 students, we have 45 students, and we have 19 students. Okay. Can we print f1 comma f2? What happened? F underscore, sorry, my bad. So I get this tuple, science में 60 student, ठीक है, we get this. Now let's do what I said. I want to get the total number of students for science, for commerce and humanities. So as I said, the operations are vector and they carry making sure that the index correlate. Okay, what I can do is I can simply print, you can simply print f1 plus f2, as simple as that. If I get this, you get science में there are 130 student, commerce में there are 75 student, humanities में there are 34 student. If I want, let us say I want to store it somewhere, कहीं store कर देते हैं. Just put it in total. And let's print this total. So you see, you'll get this. But if I want to see कि science में कितने बच्चे हैं, तो let us see कि science में कितने बच्चे हैं. As I said, in order to start something, get this 130. Let us see humanities में कितने बच्चे हैं. Now I want to find out कि get me all those streams and values जिसमें कुछ query लगा हो. Let's say कि उसमें total बच्चे 200 से ऊपर हो या 30 के, मतलब it could be anything. So I can say कि do what? Let's check for values which are above 100. There is only one such field, which is science, in which we have 130 students. Let's do it for 50. Oh, my bad.
50. So there are total 2 such streams, science and commerce. So you can play around with this filtering. You can make some difficult queries, complex queries, and you can build this full stuff. So I guess more or less series was clear, right? Series के बारे में थोड़ा idea मिला. So if I say, if I provide you with something, okay, let's do what? Let's print this thing. So let's print. If I print this thing, I got this. Can we sort it out? Yes, we can sort it. There is this 2 things for sort. You can sort by values, you can sort by index. So if I sort by index, सबसे पहले C आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देन H आता है, देन C आता है, तो वी गेट दिस थिंग. बट अगर हमको उसका उल्टा करना हो, अभी तो असेंडिंग ऑर्डर में है. If I want to do it in descending order, I simply have to write false here. So अब descending order में आ गया. अगर ascending order में चाहिए तो I can write true here. You get this? अगर तुमको values पे sort करना है, you can do it like this. अभी ascending true है, तो you got all the values in the ascending order. If you want it in descending order, you can do it. You simply write false here and you get the value. More or less, this was clear, right? Was it clear? मुस्कान मोहम्मद, आया आप लोग का? Was it clear? Perfect. Perfect. So this was something about series. अब I guess इतना confidence आपको आ गया होगा कि if I give you some documentation, so you can actually work around it and get me whatever I want. You can use Google, you can use ChatGPT, you can use Bard, whatever. Given this data, I want to perform this operation, get me the function which is in Pandas. So you'll get the function. मेरा aim तुमको रटाना नहीं है, ये सब रटने की चीजें नहीं है. I don't appreciate कि तुम उसको रटो. With the use तुम समझ जाओगे तुमको कब क्या यूज करना है, बट रटना मत इसको. बिकॉज हम जब प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, you cannot learn everything, और I don't appreciate कि तुम you learn by actually उसको रटने जाओ. We'll learn, we'll see how we can use some documentation to get stuff done. So let us do what we have seen this thing अभी तक, कि भैया हमने अभी तक देखा कि how do we make some series object. This was all about series object. Now let us dive for data frame. Let us dive from data frame. Okay. So the very first thing, if you want to create a data frame, there are 2 things. Okay, let me देखा कि whatever we are dealing with it was something in one dimension. Series हमने देखा. We can only have one attribute, right? Just a second. So this was about series. Now let us understand what this data frame is. So a data frame is a 2D object. It is a 2D array. कुछ characteristics होते हैं, like you have 2 axes. One is this row axis, one is this column axis. The row axis is by default like this. These are the conventions we use. These are the conventions which we use, like in order to represent something. Let me do what? Let me say, let us have a row index. So we denote row index as 0, and we explain this column index with 1. So this is the convention we use. Now let's see how we can actually create a data frame and what all things we can perform with it. So in order to create a data frame,
these sequences, something like that, like that is how we use it. Can we have Excalidraw here? Excalidraw, yes. Just a second. Just let me show the screen. Just tell me if it is visible or not. If it is visible, drop me a yes. So we are discussing with data frames, right? So in order to first, let's see its first component, that is creation and display. So data frame object जैसा हमने वहां देखा सीरीज में कि there was something as PD, then we have a keyword, वहां सीरीज था, यहाँ पे we would be having a capital A data, capital F. So this is how you initialize this starting, and within this parenthesis we would have some values. We would be having some values. We would be having something as, let us say we would be having some 2D data sequence. We would be having some 2D data here, right? We would be having some 2D data. अब obviously 2D data होगा तो we would be having some columns, right? Columns भी होंगे, तो we would obviously we would be having some columns. अब columns भी होंगे because as I said it is a 2D data structure with two axes. One is this column axis, and corresponding to that you would be having some index axis. You can assign index as, so this is how a data frame is initialized. This is the basic syntax. Like column की जगह क्या होगा? Column की जगह it would be something like column, then you assign it with some data. Index की जगह क्या होगा? Index, you would use this keyword is equals to, you would be having some values. So let us see how we can do it in our, okay. So as I said, in order to create something, let us build something. So let us make it something like, as I said, I'll keep it very simple initially. Let us say that we have some data, and how am I going to get this data? I can say, let's do what? Let's build a dictionary, because that is a pretty obvious way to build some 2D structure. You would be having some key, you would be having some values. So okay, you can also do some other ways, but let us say I have this dictionary. In which what I say, there are two different things. I say, or let me make it very simple. I go to gym. I have this gym. What I say is, let's say I have a day assigned. Oh no, let me track my calories. This is my first value. This is the key here. Let me put some values corresponding to this. So I say मेरा पहला दिन का calorie was 1200, second day का calorie was 1300, एक दिन पहले 1100, something like that. Let's play with 3 variables or 4. अब this was my first attribute. Remember what I'm saying? Attribute. Attribute in a table is a column. So you would be having a column named calories, in which these would be your data. So let's put some other attribute. कोई दूसरा attribute के लिए we will use this comma. So let's go for some other values. Let's say my split. What is my split? What am I gonna train? What am I gonna train? So ठीक है, let's do it like, ठीक है, let's, Monday को I train my leg, Tuesday को I train my chest, then I train my arms, and then I take a rest. Make sense? इसको यहाँ से
and let me close this dictionary. Okay, this is my data, a 2D data. You are having some attributes or some key, and corresponding to every key you are having some values. Corresponding to every key you are having some values. So if I simply print it, you will get nothing as such. You get this dictionary as itself. But what I want it in a data frame. Want it in a data frame. What happened? PD is not defined. Oh, now you see. You have these two key values which are acting as the attribute or columns in our table. So every value is a series object here because we are talking in one dimension for every column. Whatever key we assign, we have it as a column. So we saw how to create it. अब obviously 0, 1, 2, 3 यहाँ पे work कर नहीं रहा है, right? It is not making sense here. So can we have some index? Yes, you can make some index here. I can have an index of Monday, Tuesday, Wednesday. So you are assigned with the index as whatever we assign here. तो जो हमने वहां किया था we can also do it here. We can अगर हो सकता है तुम्हारे पास डेटा हो एक 1D object में, and if you want to assign the column names, you can do it. That is something I am keeping it for you. Let us do what? Let us see what would happen. Let us see what would happen if we'll use some dictionary within a dictionary that is a next nested dictionary. So what I say is, let's do this. Let's talk about some topper detail. Topper. So what I say is, I have this first topper named Shrinjay, in which let us store some details. Detail I want to fetch that detail. So let's say my role is 1, my age is 20, my CGPA is 9. I can also do it in the same way for some other name. I can do it. Obviously, I can do it. Let's have it for Neil. Let me simply copy this thing here. बहुत easy है ये चीज. Let me change with some values. 3, age 25, CGPA 4. Since I didn't keep comma, makes sense. If we close this dictionary, fine. If I want to create a data frame for this, can you just tell me कि इसका attribute क्या रहेगा और इसका columns क्या रहेंगे? You see, whatever the key value we assign to the initial dictionary, that would be our attribute. As simple as that. कुछ छेड़छाड़ उसमें नहीं हो. But if we are using nested dictionaries, we have to make sure कि we have the same key values. अगर मैं कुछ और key value यहाँ पे रखूं, let's say I have another key value this as let's say my percentage, and I'm only assigning it for some let's say 55%. I can make that, but इस corresponding index के लिए मेरे पास पहला value नहीं था, and I said how do we handle a missing data? We use this NaN or not a number, so you get this thing. So more or less ये part I assume कि this was clear. How do we initialize a data frame? You can initialize in बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं. Let me tell you one more thing which is a very interesting stuff, or you can say a feature of this data frame. Let me open my Excel for you. I guess, is it clear? Just tell me if it is clear or not. Can you see this Excel? I have a data in my Excel. I have a week column,
I have a content column, I have a subtopics column. ठीक है? Can we do it ऐसा कि I simply put this thing in a data frame? Can we do it? Yes, we can do it. हमको यहाँ पे डेटा इनिशियली बनाने का जरूरत नहीं है. इतना मैं लिखने जाऊंगा बनाने जाऊंगा वैसे तो मेरे पास बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. I can simply what there is this function. देखो मेरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखो कैसा है. I have this folder in which एक मैंने डेटा फोल्डर बना दिया और इसमें मैंने अपना जो डेटा था ये रख दिया. You can also use URL, no issues. Let us say my initial data is this. I want to put it in data variable. What I want to do is there is function known as p.read. So we can read CSV file, we can read Excel file, we can read HTML file, we can read JSON file. I want to read Excel file, right? Now I want to put the address कि वो Excel file है कहाँ. I can go for relative path here. I'll put it here and I'll simply print data. So my entire Excel is now converted into a data frame. You see, जो था मेरा वहां पे वो यहाँ आ गया. अब now I can perform whatever operation I want because when we will be building some machine learning model होगा क्या कि we would be having some data in CSV format, we would be having some data in XLS format. अब ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि मैं उतना लिखने नहीं जाऊंगा कोड. I'll simply fetch it using this read function और just जो type है we'll simply write the type. अब I can do whatever I want with this data. Like we can also sort this thing. You can get indexes, you can get values, whatever you want. As we have seen, like indexes, if you want to get index, get this, sorry, let me do it for values. There's this attribute, values, whatever the values are there, you get it. Whenever we are trying to make a parenthesis, you will always get this type error because this numpy nd array is not callable. ये एक बहुत interesting feature है of data frame. Try to do it by your own. What is the actual difference between an nd array, which we do it in numpy, and what is the difference between a series object or a data frame object? You can also have something like, you can also count its dimension, ndim. 2 dimension होगा, pretty obvious. We can have something like that. Has nans. Okay, अच्छा इसमें तो हो गई obviously. Now let's do what? Let us see कि we have this data. Fine. Let us do what? Let us try to get its various properties जो हमने अभी देखा. We got its index. We got its. We can have something like this. Very interesting thing. Columns. So these are all the columns which we would have that. And let's do what? Let me tell you a very interesting stuff. If I want to calculate the len, so there are 30 indexes. What would happen if I want to get a count of it? I get 29. Fine. Let me do what? Now you see, I get there are 8 weeks, there are 25 content and 30 topics. Although हमने देखा कि हमने बीच में बहुत सारे nans यूज किए थे, I'm still getting a total aggregate. Weeks 8 week है. There are 30 content, 25 contents and 30 topic. So we can say whenever we are using this len function, हम not a numbers को भी count कर ले रहे हैं. And whenever we are using this count function, हम उसको skip कर दे रहे हैं. Make sense, मोहम्मद? हाँ सर. बट अभी डुप्लीकेट्स रहा तो भी काउंट करेगा. You can, there is this function known as unique. So see, मेरा aim तुमको syntax रटाना नहीं है. मेरा aim is not to actually syntax रटा के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा because everything is there in the documentation, everything is there in the Google. You're just one Google away.
The aim is to actually help you out कि how do you actually read that documentation and get the thing done. Because हम जब project अभी बनाएंगे, जब machine learning project बनाएंगे, we'll see कि ना मेरे को सारे syntax याद है ना तुम्हें याद होंगे, ना किसी को I expect कि किसी को याद होगा. It is all that कि जिस field में हम लोग हैं, the most interesting thing is it all goes down to what to search and where to search it from, right? हमें क्या सर्च करना, कहाँ से सर्च करना, it is all what matters. So we have discussed this thing. We can have different count function, बहुत सारे function है. You can use it. You can slice you can extract the same thing as, let's say we have this week column. You can get the values corresponding to the week. There is this content. Whatever content I want, I can have the content here. What would happen if, let's say, I want to extract something which is not present? You would have some index error or range error, as you can see. Let us do what? Let us build, so as I said, head function give you some basic understanding. Let's see, ये data है, मैं जानना चाहता हूँ इस data में है क्या क्या. तो I can see हाँ इस data तो में week फाइव है, का आ content. जाएगा. हाँ, एक काइंड ऑफ अगर हमको डेटा में जानना है क्या है क्या नहीं है, तो एक आइडिया मिल जाएगा. अब इसके अंदर आई कैन पुट कि मेरे को क्या कितना वैल्यू में देखना है. आई वांट गेट द फर्स्ट 5 वैल्यूज आई गेट. आई वांट टू गेट first 10 values, I can get the first 10 values. If I want all values, you can print len of x. You'll get len of data, sorry, my bad. You'll get the entire thing. More or less this was clear, right? Clear. More or less this was clear. You can also have something known as transpose. You can transpose this thing. Now everything has shifted its और रो axis. से कॉलम हो जाएगा. रो से कॉलम, कॉलम से रो हो गया. हम जब मेट्रिसेस भी यूज करेंगे आगे, बिकॉज मशीन लर्निंग इज 80% योर मैथमेटिक्स, 10% योर थ्योरी एंड 10% योर इम्प्लीमेंटेशन. तो वहां पे मैथमेटिक्स हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे. सो आई एक्सपेक्ट कि बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, एटलीस्ट आपका बेसिक लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस क्लियर होना चाहिए. थोड़ा सा कैलकुलस पार्ट, डिफरेंशिएशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है, आई गेस इतना. You see, access हमने कॉलम की यूज से किया. Can we access data using rows? Can we do it? Can we access? अच्छा, रुको, one more thing. We have seen we can access it using one column. Can we access it using different columns? Let's say week. So if I get for week, I get all the values. Can we access it using some other column? You see, you'll get this ये key कॉलम error. ही नहीं है. हाँ. अच्छा, let me do it for content. Bro, अभी you have taken weak column, right? Wait just a second. Let me help you understand कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं. If you read this thing, you're getting this key error, right? You're getting this key Single error. quotes, double quotes. नहीं है. Just see कि whatever we are getting it as a list. So this value has to be a list, right? अभी जब मैंने ऐसे किया तो मेरे पास data actually present ही नहीं है, because the data has to be in a list. Now you get this. ये एक value है, it corresponds to one list. So we want to get this list in which we would be having some week and content. You can get multiple, ऐसे अगर 10, 15, 20 column है तो you can get whatever you like. एक column चाहिए, एक column मैंने पास किया. Multiple column चाहिए, multiple मैंने पास किया. So this was about how you can access some columns. What about if you want to access some rows?
Can we do it? Yes, we can do it. There is this very interesting function, you can say function or you can say attribute, which is known as .loc. .loc stands for location. So its basic syntax is whatever data frame you want to use, you can use on that. And within this loc, what you have to assign, you have to assign the start start row. You have to assign start row. कहाँ से हम किस रो से हम स्टार्ट करेंगे, किस रो तक जाएंगे, ठीक है, किस रो से स्टार्ट किए किस रो तक जाएंगे. Then you do it for this, do it for columns. Start column, हाँ काइंड ऑफ रेंज, यस. एंड कॉलम, बिकॉज हो सकता है कि हमको कुछ डेटा कहीं से कहीं तक किसी अगर स्टूडेंट का मान लो पूरा ईआरपी डिटेल है, उसका फादर मदर नेम एड्रेस फोन नंबर ईमेल मार्क्स व्हाटएवर. इफ आई ओनली वांट टू गेट इट्स मार्क्स, ठीक है, सो यूजिंग द हेड फंक्शन आई गेट कहाँ से कहाँ तक है, क्या कौन कॉलम है, आई कैन सिंपली कॉल आउट दैट थिंग. ठीक है, लेट्स सी let us use it here. इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए. Or okay, let me simplify this for you. Let me simplify. It's quite complex. Let me make this very. Let me make this very. PD dot data frame. Data is equals to. Let's have some values. Let's say 12, 13, 14, and my indexes should be. Indexes should be something as. Let's say A, B, and C. Let us take it for a very simple. So if I pass it out, I have this data frame with me. Okay, let us store it some variable X. Or we can have multiple data. You can have a list within a list, nested list to get the 2D structure. Okay. What am I saying is, I want to access a row. I want to access a row. In order to access a row, what I have to do, x.loc, and then actually I assign, ki what do I have to access. I have to assign what do I have to access. So here, if I say I want to start with A, you can also start with Muhammad. See, I want you to open that documentation for me. I want you to open that documentation for me. If it is opened, let me share this for you. Page number, acha, do one thing, refer to this documentation. You can simply write .loc, you will get that. If you use control plus F, you'll have a search bar, and that you can write. Otherwise, use this. Let me open it. So you see, why do we use this .loc? To access a group of row by labels, right? You can have something like as simple as some single label, or you can have a list. So how we can see, how does it work? Let us say we have this data frame in which we have a 2D list, we have the index, we have the value. Now what I say, I want to have this value corresponding to this row. I want to have a value corresponding to this row. If I simply write, if we simply assign, जैसे मैंने वहां बोला, we assign a starting row. If I assign the start row, whatever the corresponding fields are, I got that corresponding to this thing. We'll implement it there, or you can simply use multiple. You can get that. There is one more interesting thing. You see, let me show it here. I lock 1,
Just try it by yourself and just tell me. Just try it by yourself. Let me head over. Let us try. Let's see if it works or not. Because I don't. Huh. My end row is nothing, so I get this whole thing. You can actually play around with that syntax. You can have starting row, you can have ending row, you can have starting column, ending column, selective columns. If you want to select for some particular columns, what you have to do, you have to make your first rows and columns user defined, because if we don't assign something, the interpreter will assume that it start with the first row goes to the end row, and then you put a comma, and then within that thing you can assign whatever columns you want to find. I guess थोड़ा सा ये part clear हुआ थोड़ा थोड़ा. Let me actually do what? Let me simply copy paste complex data frame. Okay. So I have this data frame with me. My bad. Just a second. So I have this data frame, and if I print it, let's see what happens. I get this thing. Make sense? So if I want to get lock on some, let's say, rows, let's say Cobra till Sidewinder. Just a second, it should be square brackets. Okay. You will be thrown with this error. Okay. मैंने rows पे पहले iterate किया. I want all the values from Cobra till here. Okay. I only want in column, I want max speed. So I got the maximum speed for all the rows I have seen. I want not only for max speed, I want for shield. So I can have a range. Make sense? I can now, if I want, let's do what? Let us find what is the maximum of this whole thing. So you'll get an entire object. Let us do what? Let us say, let me describe it. Use this function. So corresponding to every column, I get the count, कितने element है, क्या mean है, कितना standard deviation, what is the minimum value, थोड़ा idea मिल गया. Perfect. Let us do what? Let us try to perform some calculations. Hopefully, let us try to perform some calculations. I say, let's do what? Go to this column and throw me out the maximum values. The maximum value is 7. I get this. Do what? Go to this value and get me the mean. I get the mean here. Go to this thing and get me all the values. I get all the values. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, you would be thrown with this error because it is a numpy array. I get all the values. Make sense? थोड़ा थोड़ा. If we want to perform some operations, we have to make sure कि हम किस column में हम वो operate करना चाहते हैं. Make sense? थोड़ा थोड़ा. We cannot simply perform everything on the entire data frame. हमें कुछ जैसे for example, if there is this percentage column, अगर average percentage निकालना है तो I can go on that. Min max, there are different like mean, median. You can have something as quartile function. There is one more interesting thing known as
फाइंडिंग द मिसिंग डेटा, वील लर्न। आगे जब हम एक्चुअली प्रोजेक्ट बना रहे होंगे वहां पे वील सी। सो मोर लेस थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला हमें कि व्हाट दिस डेटा फ्रेम इज एंड हाउ वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन दिस। एक आइडिया मिला ऊपर ऊपर से, इतना कॉन्फिडेंस आया कि इफ आई सिंपली गिव यू डॉक्यूमेंटेशन वी कैन इम्प्लीमेंट इट, राइट? परफेक्ट। कोई क्वेरी है मोहम्मद? कोई क्वेरी है? नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक नहीं है। अगर इनकेस है भी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज चुपचाप जाओ, गो बिल्ड अ सिंपल प्रोजेक्ट, सिंपल जो तुम इंप्लीमेंट कर पाओ, छोटा सा एक प्रोग्राम। बिकॉज हम जब प्रोग्राम करेंगे और हमको जब कोई भी दिक्कत होगा, जब हम उसको डिबग करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाता है। ठीक है, जब मैं ये कंसेप्ट क्लास 12th में पढ़ा था उस टाइम आई वॉज नॉट वेरी क्लियर विथ इट। जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया इस पे तब मेरे को जाके चीजें क्लियर हुई। और ऐसा मत समझना कि इफ आई सिंपली गो ऑन गूगल और मैं कुछ सर्च कर लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा ना। सब चीजें तुमको नहीं याद हो सकती ना, जिसने बनाया होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन का 3000 कुछ पेज का है। So it is just a fact you should know what to search and where to search it from. Else everything is clear, I guess. आज के सेशन we can मतलब also प्रॉम्प्ट इंजीनियर। you just have to like मेरे इंटर्नशिप में मेरे पास सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रहता है। लाइक कंपनीज अपने से कुछ लाइब्रेरीज बनाती है एंड वो लाइब्रेरीज हमने कभी नहीं देखा। ऑल वी हैव इज दिस डॉक्यूमेंटेशन। अब वो डॉक्यूमेंटेशन में पढ़, यू हैव टू रीड इट आउट। कुछ हमको सर्च करना है, आई कैन सिंपली यूज control.f जो कीवर्ड। अब जैसे कुछ कोई फंक्शन चाहिए सर्च के लिए, आई कैन यूज सिंपली सर्च। कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसमें वो सर्च का फंक्शनैलिटी होगा, आई कैन सर्च, आई कैन यूज इट। सो मोर लेस एवरीथिंग गोज विद दिस डॉक्यूमेंटेशन। मेक सेंस? मालूम पड़ गया, मतलब परफेक्ट। जो चीज कीवर्ड के हिसाब से चेक कर रहे हैं आप। हाँ, कीवर्ड लाइक फॉर एग्जांपल, ओके लेट मी एक्सप्लेन इट। जस्ट अ सेकंड, let me open this thing. You have this documentation, right? Just tell me if it is visible or not. ये पूरा documentation है. One way is you have this thing. Now let's say if I want to slice it, I have this slicing, but say, oh, just a second. I can have this control then F. See, इतना सारा मेरे को आ गया LOC जहाँ पे यूज हो रहा है. I can have something as dot rename. You can also rename. Now you get a basic idea. Like, see, there is this function known as rename. You can rename columns, you can rename anything as you wish, right? Make sense? So it all just goes down to a very simple thing. How comfortable you are. Like, see, if we have this data frame and if I want to rename the columns, ठीक है, मैं rename function use करूंगा, then we assign this attribute column, and within that column I can actually pass on whatever I want to change it with. If let's say I want to have some processing, I can use this trim function to get out the values. To use sort, I can use this sort, and we are, I guess, more or less we are very much clear. Like you can have this function upper, like you can have, like whatever values you are having, we extract this value and we simply use str.upper, we'll make it in uppercase. More or less, I guess I expect कि ये part clear हो गया होगा. Like we have this drop and then this duplicates, जैसे तुमने बोला कि कभी हम data clean करेंगे, because see machine learning model में सबसे पहला step होता है to get the data and the second step is to clean the data. जब हम data cleaning करेंगे तो we'll use these functions. Like you have this duplicates, you have this unique. You see, you get this unique. So whatever are the unique fields, unique columns, you'll get it. ठीक है? So it all goes down to a very simple thing. तुम कितना अच्छा से documentation में search कर सकते हो, that is most important thing. Otherwise, you're always up for ChatGPT or any other Gen AI tool you want. You can simply go to ChatGPT,
give you document structure, data frame structure, and you just simply say कि मेरे को ये काम करना है, do it. It will have something in its database, knowledge base, what I mean. वहां से कोई function होगा जो करके दे देगा. So more or less this was clear about data frame, right? कोई query, मोहम्मद? कोई query? Should we wind up? Should we wind up? Okay. So the best thing is कल we'll start with matplotlib. We'll start with plotting graphs and different things. Start with that thing. मैं कोशिश करूंगा कल ही मैं combine कर दूं with file manipulation. थोड़ा सा ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत नहीं है फाइल के साथ खेलना. It is all just how to read it, load it. That's it. उससे ज़्यादा हमारे स्कोप का नहीं है. अगर तुमको करना है, you have this documentation, you can go out in depth. My main motive is to teach machine learning, and I'm teaching Python as a tool. तो मैं सिर्फ tool हिसाब से इसको cover up करूँगा. If you want the proficiency, you have to do it by your own. So I guess that was it for today's session. If you have any query, you can hit me up in the group. I'll surely happily respond to that. So should we wind up? Yeah. Perfect. Thank you.